You live in Mumbai. Yeah, Mumbai. Standup. Yeah, अपनी माती अपनी मानसा टाइप। ये तो 50 रुपए का पेस्तोर आप खरीद रही है रोड ट्रिप के लिए। किधर जा रही हो आप रोड ट्रिप के लिए? मुंबई पुणे जाने का तो हमारा दत्ता वड़ा पाव है ऑन द वे उधर। No one can beat दत्ता वड़ा पाव। I can fight people on दत्ता वड़ा पाव है। वो सॉन्ग कॉल 56 lakhs 125 स्क्वायर फीट का घर है। मैंने बोला कि घर में लोग अटक जाएंगे। Somehow I want to sell a stadium like comedy में Brabant कुछ भी चलेगा। somehow हाँ ब्रेबॉन में चलेगा हाँ। Brabant भी चलेगा। Very very humble you are। I did an MBA, by the way. I'm just saying. बहुत लोगों ने किया हुसैन प्लीज। Was it useful or not? We will find out when you start teaching. मैंने नहीं किया भाई तो मैं सेल्स में हूँ। I'm going to teach you what is coffee. Different types of coffee. And what you're going to teach me is sales. Yeah, How to sell things. how to sell yourself How man। to sell myself. Take a shirt off and dance. Exactly what you shouldn't be doing। Nanga natch karo, nanga natch. Hello and welcome to another episode of whatever this show is called. Still, the podcast does not have a name. Very much a professional podcast। But I'm hoping to change that today with our guest and dear friend and fellow Mangalorean. I forgot to record an intro. So here is the intro. This is my friend, fellow comic and very funny person, Siddhartha Shetty, everybody. Drum roll। Never been to Bangalore. Have you been to Bangalore? I have been to Bangalore। You've been to Bangalore. What is this? You are tagging me। You've been to Already, Bangalore. yeah, Okay. But yeah. obviously, I don't frequent much। yeah, you live in Mumbai only. Yeah, Mumbai। Kanduli. Yeah, अपनी माती अपनी मानसा type। So Marathi now, not Tulu. You see where his allegiance is like. Yeah। So, as someone who works in sales, I hope today you're going to help me figure out what to name my Yeah, podcast. let's do this, man. Let's do this. Yeah, the Okay. name and Name, place, name, yeah, name, place, yeah. Cool. So yeah, before we start, the two things that we're going to be speaking about today is, now I know Shetty is a fruit enthusiast. You might have seen any of his avocado videos. Yeah, a lot of fruits fruit that I like, politics. yeah, especially Yes. avocado and Avocado supremacy, and mango has hate towards avocado. There's like a whole Game of Thrones happening with fruits. Very interesting. You should check it By out. the way, I also do stand-up comedy. Yeah, surprise. Which is what is the main thing, obviously. Dude, like I ask my audience at all my solos कि कितने लोगों को पता है मैं 2017 से stand up कर रहा हूँ, उसमें से कोई हाथ नहीं उठाता है। I'm like भाई मैं इतना वीडियो डाला है तुम लोग कभी नहीं देखा, इतना shallow लोग हैं तुम लोग। But those videos have gotten good views also. Yeah, but they never helped me sell tickets, man. It's just the avocado thing that got me here. Maybe this podcast with the 6 viewers that I'm expecting, my mom, dad, Mariam, me, you, Yeah. and your mom, dad. Yeah, my mom will also watch. They're very sweet, yeah. I'm counting for 7 views. Yeah. And Varun and Aditya, Varun I'll make also, them, yeah, make we'll them make watch. them. My friends, yeah. Vineet also, I'll make him watch. Yeah. Anas also, Within I'll the make him scene, yeah. Gig info, at least 35 people. Gig info is where all comedians are. 35 people. 35 will people watch. Yeah. will force them to watch. Right. So, you, more than a fruit aficionado, you're also someone who loves coffee. I know. Yeah, I love हम एक दो बार coffee. कॉफी पीने गए हैं तो हमेशा ब्लू टोका करता रहता है. So I'm going to be teaching about the thing I'm going to teach you what is coffee. Different types of coffee, different types of methods of making coffee, and how they are different and what's better, what's worse. I mean, there's no better, worse, but like preferences and things like that. And what you're going to teach me is sales. Yeah. How to sell things. How to sell yourself, man. How to sell myself. Take a shirt off and dance. Exactly what you shouldn't be doing। Nanga natch karo, nanga natch. But the reason you are doing sales is because you work in sales Yeah. at an infrastructure company. Are you allowed to say company name? And I'm not, let's not name the company. It rhymes with one of the zodiac sign. It rhymes with something called as an aquarium, yeah. I know the company name, but I can't figure this riddle out. But okay, fine. ठीक है, चलेगा. It's okay. You work in an infrastructure company, you do sales. So you're going to teach me about sales. Sales। Yeah. I had done an MBA, by the way. I'm just saying. बहुत लोगों ने किया हुसैन प्लीज। Was it useful or not? We will find out when you start teaching. मैंने नहीं किया भाई तो मैं सेल्स में हूँ। The sales guy is going to teach me sales to an MBA guy who passed his exams, and मैंने sales किया है 6-7 महीने के लिए. You know, कहाँ पे किया तूने? I did Z में. यहीं पे मेरी ऑफिस थी. Oh, nice। Marathon Future X, and the Z, I did ad sales. You know what that is? Yeah, I know। For the viewers, for people who are listening also. You have to sell slots, right? Ad slots. So जब लोग टीवी देखते थे एक ज़माने में, तो उसके बीच में जो ad आते थे, वो per 10 seconds you sell that slot for a fixed price. I used to work for Z Cafe,
which was a great time for me to be in that show. In that Oh, sales I pitch. remember Z Cafe for all the wrong reasons. Yeah. Yeah, Z Cafe was one of those channels, right? And Z Cafe was dying जब मैं वहाँ पे काम कर रहा था. तो मेरे को sales पे प्रेशर ही नहीं था, क्योंकि जो भी टारगेट वो डाल रहे हैं, मेरा बॉस ही वो अगर अकॉम्प्लिश नहीं कर पा रहा, तो द चैनल इज डाइंग एंड इज डाइंग. एंड बिफोर इट डाइड आई लेफ्ट. So You it was left. perfect time. You started doing stand-up comedy. I was doing stand-up comedy then also. Then I got a writing job and then life went from there. That's what मेरा घर writing से चलता है. It's not a secret. Because you can come to my shows and count how many people are there and count the ticket price and do the maths about the flight price and figure out that Like ये तो writing से चल रहा है. this is not how a house is going to run. Yeah. So, but hopefully this podcast is going to be the Yeah, it's gonna change Hussein's career. He's gonna sell Wankade. inshallah one day. That's the dream. I want to sell a stadium one day. Why not? Yeah. Have a lofty goal. Somehow I want to sell a stadium. Like Yeah. a comedy में Brabant कुछ भी चलेगा. somehow हाँ Brabant में चलेगा हाँ. Brabant भी चलेगा. Very humble you are. टारगेट तो बड़ा होना चाहिए ना सेल्स में. हाँ. क्या बोलता है? Exactly. Yeah. Right. So yeah, so that's my little bit background. I did sales in Z also, but let's see, I'll learn from the actual person who's done it successfully for a very long time. Before we start, क्या चल रहा है जिंदगी में बता. जिंदगी में is work and then I've been touring with my solo. Fuck your avocado. Fuck Your Avocado and I've been putting out content Yeah. and that's about it. Do you like it? Do you like the Instagram race? Algorithm के पूजना. It's not the race I would say. It's just that I like doing reels and they're not thought after. And there's no proper ideation or anything. But तू लिखता तो है ना, जोक लिख के करता है कि you just start camera at this. मैं कितने लोग मुझे जाके बोलते हैं कैसा सोचा है. मैं सुट्टा मारते मारते सोच रहा हूँ, मैं कुछ टीवी देख रहा हूँ, मैंने रील देख लिया. आई जस्ट शूट इट ऑन इम्पल्स. मुझे लगता है कि अगर मैंने अभी ये आइडिया पे काम नहीं किया, ये थोड़ी देर के बाद मेरा कन्विक्शन खुद चली जाएगा इससे. फॉर एग्जाम्पल कैसे बताऊँ मैं फॉर एग्जाम्पल अभी परसों देख रहा था कि कोई तो फूड चैनल है, वो लोग ऐसा, मैं उसके ऊपर रील बनाने वाला हूँ कि वो लड़की जाती है, कोई फूड स्क्वायर करके कुछ खुला है सेंटा क्रूज में, वो महंगा वो चिप्स बेचते हैं ना लोग 400 रुपए 500 रुपए का, बोलते हैं कि स्नैक्स यू नीड टू कैरी फॉर ऑन अ रोड ट्रिप, और वो 500 रुपए का चिप्स खरीद रहे हैं. बोला 500 रुपए में 500 रुपए पूरा, 250 रुपए का लोग रो रहे हैं. हाँ मैंने बोला 500 रुपए में पूरा मतलब वड़ा पाव, मिसल पाव, सब पाव भाजी सब आ जाएगा, मतलब बंदा हाँ ये भी आ जाएगा उसमें मिक्स करके. मैं बोला कि चकना आ जाएगा. बोला 500 रुपए का दिस मच चिप्स ब्रो. लड़के लोग देखा कैसा खाते, ऐसे खाते हैं हम लोग ऐसे खाते हैं, वो पूरा खत्म हो जाएगा. फिर उसने कुछ तो खरीदा, कुछ सम पेस्तो रैप फॉर 650 रुपीज. ये अमीर लोग का मैंने देखा है, वो मुंह खोल के बात नहीं करते. हाँ मैंने बोला कि ऐसे ही बात करते हैं. या सम पेस्तो रैप. मैंने बोला कि 650 रुपए का पेस्तो रैप खरीद रही है रोड ट्रिप के लिए. किधर जा रही हो आप रोड ट्रिप के लिए? मुंबई पुणे जाने का तो हमारा दत्ता वड़ा पाव है ऑन द वे. उससे नो वन कैन बीट दत्ता वड़ा पाव. आई कैन फाइट पीपल ऑन दत्ता वड़ा पाव. ओ माय बैंगर केल्सा. Yeah, so you don't write this stuff down. I don't write this stuff down. It's because तुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी बार ज्यादा सोचूंगा तो मैं अपना को कन्विंस कर लूंगा कि ये जोक फनी नहीं है, मत कर. प्रॉब्लम क्या पता है अपना, कि we think from a setup and punchline point of view. So if we think about it for a while, then we try to write a joke which essentially is not relatable. तुझे rant ही करना है. वो उसको नहीं पता, बहुत लोगों को नहीं पता. भी पंचलाइंस तो होनी चाहिए ना. हाँ रैंट पे कभी बीच जो कुछ फनी चीज मैं बोल देता हूँ जो पिछले रील में चला वो लेके आ गया. या कोई चीज ऐसा हुआ कि कोई पर्टिकुलर वर्ड है वो बोल दिया. बट इट एसेंशियली डजंट हैव टू बी अ जोक. Right. Because you're putting pressure on yourself. It has to be more emotional. So there are iterations. There are like 4 to 5 iterations when I shoot the video. I'm like अरे नहीं ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है. But ये 90 सेकंड में तुम क्या ही करोगे यार. 90 सेकंड का रील डाल नहीं सकते because algorithm doesn't support it. So you have to make it shorter. You have to make it crisp. अच्छा तो 3-4 वर्जन हाँ, so करता है, my- जो हाँ. भी तुझे फनी लगता है वो My एक बार करके subtext has always been that I'm a middle class guy who doesn't believe in spending a lot. हाँ. और मैं ऐसे हाँ वो सब तो देखा है. ये प्रॉपर्टी आप देख रहे हो 200 करोड़ की, only 200 crores. अरे ब्रो कट टू सिद्धार्थ शेट्टी 200 करोड़ काका. अरे भाई अभी बता रहा हूँ मैं उसमें बनाने वाला हूँ. मैं कितना शॉर्टलिस्ट करके रखा. उस दिन मैं देखा कोई तो एक फ्लैट दिख रहा था. अरे ब्रो सम पर्सन 56 lakhs 125 स्क्वायर फीट का घर है. मैंने बोला कि घर में लोग अटक जाएंगे.
no one can be. It'll be traffic jam. मेरे को लग रहा है कि वो आजी आजोबा रहते हैं ना, उनको ऐसा पोर्टेबल बनाना पड़ेगा कि ऐसा हाथ पे ऐसा गुड़गे का ऑपरेशन हो रहा है ना, इधर ऐसे इधर से फलक्रम बिठा है लेवल कि Yeah, ऊपर रख दिया. it is for people who want to shit, eat, watch TV at the same time. Yeah, man. It's just सब एक जगह ridiculous. खड़े रह के सब हो रहा है. Very nice. Right. But I get that's your energy, that's the vibe. But I feel very bad about it also because I see other creators doing so much efforts, they're properly shooting things, and मैं कुछ creators का देखता हूँ, they put a get-up रहता है, proper scene रहता है. यहाँ पे मैं बस ऐसे कैमरा चालू करके Yeah. बड़बड़ कर रहा हूँ. और इतने सारे views आ रहे हैं. You crossed 50K recently also, no? Yeah. Yeah. I want to, like, I'm also starting my own podcast, by the way. उसका Yes. नाम भी है, it's called Triple Shazwan Fried Rice. Yes. Classic Shetty naming. Yeah. So thing is that I've always been intrigued by that dish because it has everything. It is like, yes, it is love. Sure. I thought it would be funnier to be like Shetty lunch corner, Shetty podcast corner, like that. But I didn't want it to be Shetty because I'm not a Shetty. I'm a Shetty, but मेरा behavior या मेरा Is not very. my whole persona is not a very Shetty. I don't come up with a Shetty, so I wanted it to be something that Very I good. eat. तो मेरा हमेशा go-to food, comfort Yeah. food ही रहा है. Triple Shazwan Rice bangers, always only bangers. Yeah. So you've been doing stand-up since 2017. Yeah. And you're doing tours now. So I know it might feel like a long time or whatever, but did you ever expect that this तेरे लिए 50, 60, 70 जितने भी लोग आते हैं आएंगे? Was it a need? Was it expectation? Or are you happy that? No, I'm just happy. It's still very overwhelming that they're coming, and a lot of people who come to my shows, they are first time stand-up audience because they never seen stand-up. They just That's one thing, dude. मैं भी जब भी शो करता हूँ ना, तो बहुत सारे लोग अभी भी अगर लाइन अप शो भी होता है रेगुलर हैबिटेट पे जहाँ पे बाय द वे 6 बजे 8 बजे 10 बजे 12 बजे अब तो 4 बजे भी सो लाइक दिन में 6 शोज होता है मोस्टली दे आर ऑल फुल बिकॉज हैबिटेट इज वन ऑफ द बेस्ट वेन्यूज इन द कंट्री एंड still even in those shows when I ask audience how many people are watching for the first time 30-40% of people are watching for the first time which gives me hope also मतलब इतने लोगों ने आज तक लाइव स्टैंड अप एक्सपीरियंस नहीं किया exactly. So because when you watch it online when you watch it live जमीन आसमान का फर्क होता है जमीन आसमान का फर्क होता है right wouldn't you think? I think it's still top 3% of the country that is watching. I think लोगों को लगता है कि बहुत सैचुरेट हो जाएगा बट आई थिंक सैचुरेट नहीं हुआ है. I think it's still at a very nascent stage wherein people are still coming in because like you said कि तेरे shows में नए लोग आते हैं and that's again they become a stand-up audience so they come to your show they see opening acts then they see you then they're like अरे चलो किसी और के show पे भी जाते हैं. मजा आया था पिछली बार उनके show. हाँ so you're opening up that audience and audience gets added to the stand-up stream. और ये जो बहुत सारे लोग हो गए हैं and it's become what's that word? Saturated. Yeah, I don't buy that at all. Because जब मैं 8वीं 9वीं में था ना तब YouTube नया शुरू हुआ था and तब मैं YouTube बहुत देखता था. Like I was an early adopter at that time. So during that time I have made YouTube videos that have gotten 100-200,000 views. I'm a big tech enthusiast. तो मैं how to jailbreak your iPhone. Oh ये मेरे को नहीं मालूम था ये सब. अरे भेजना मेरे को क्या है? मैंने किसी को नहीं पता. I've never seen this side of you, Hussain. यार. No one will ever see this. मैं आज का पूरा दिन अरे मैं घर जाने के बाद इसी चीज में लगाने वाला हूँ. मैं अपना आधा घंटा उसमें लगाने वाला हूँ. नहीं. It is very. मेरे पास वो Intex का हेडफोन था जिसके अंदर मैं ऑडियो रिकॉर्ड करता था और मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाता था कि आईफोन. अरे तू मतलब तू हसलर है तो मेहनती है पूरा. मेरे को बहुत पसंद था. स्वीट यार. मैंने 1-2 वीडियो ऐसे बनाए उसके अच्छे व्यूज भी आए बट मैंने ऑब्वियसली एज अ किड मैंने YouTube करा. YouTube पे सर्च करा. You could have been the next technical guruji that MKBHD bro. टेक्निकल गुरुजी तो dude टेक्निकल गुरुजी क्या वो आईफोन लेके घूमता गोल्ड वाला कुछ 2-2.5 करोड़ का. राइट. आई मीन the reason that didn't happen is because जब मैंने 2-3 वीडियो बनाए और फिर मुझे लगा कि ये सीरियसली करना है मैंने गूगल करा हाउ टू बी यूट्यूबर तो यूट्यूब वाले वीडियो ही आए जो सिखा रहे थे हाउ टू बी यूट्यूबर और वो सारे वीडियो में वो यही कह रहे थे कि अब तो सैचुरेट हो गया अब तो बहुत सारे लोग हुए. ये 2009-2010 की बात है. अगर मैं उनकी बात नहीं मानता and I continue to make videos I mean all's well that ends well maybe I would have never done stand-up and I think stand-up is the favorite part the best part of my life is doing stand-up even though right now it doesn't make a lot of money maybe but it's my favorite part. So maybe I would have become a tech reviewer or something like that and maybe this would not have happened. So all's well that ends well but ये सैचुरेशन वाली बात मैं नहीं मानता. मुझे लगता है कि हम आपस में क्योंकि डायनामिक चेंज होता है ना क्योंकि एक टाइम पे 4 साल 5 साल पहले अगर तुम 1-2 वीडियो डालते थे और अच्छे व्यूज आते थे तुम्हारा करियर बन गए
हाँ, अब ऐसा नहीं है. अब अगर even if your video does 4, 5, 6 million views, you got to put another one. because what has happened is that we are forgetting that there is a big life event that happened in everyone's life, that is COVID that happened. Yeah. And if COVID wouldn't have happened, short form content का जो growth है, and people got kind of used to it. They got conditioned to watching short form content. So अभी ऐसा हो गया कि लोग बोलते हैं कि अरे मैं क्यों देखूं 5 मिनट का वीडियो, मैं शॉर्ट्स में देख लूंगा ना उसको. Yeah. बट आई स्टिल फील अगर यूट्यूब का जो 5-10 मिनट का वीडियो होता है, जो बंदा वो देखता है वो पसंद करने लग जाता है बंदे को. लाइक शॉर्ट्स में तुम्हें व्यूज आ रहे हैं, Yeah, but तेरा चेहरा एक्सप्लोर पे आएगा, बट वो कनेक्ट नहीं होगा कि आई नो हु दिस पर्सन इज, आई नो व्हाट ही इज डूइंग. but again the algorithm is very tricky. You can't gauge like Instagram then to. अभी मैं मेरे डैशबोर्ड में जाता हूँ, मुझे पता है मेरा नेगेटिव में चल रहा है तो मेरा वीडियो इतना नहीं चलेगा. I have to badger the algorithm with more reels, with something that is more relatable. Like if normally I'm putting like 3 to 4 reels in a week, if my reach is low, I know I have to put 4 to 5. I have to put more stories, so I know that algorithm will reward me. But in case of YouTube, it's a little challenging because the whole structure, the understanding of it is so obscure कि तुमको समझ नहीं आता because आपका per subscriber count doesn't matter anymore. subscriber count doesn't matter. A, B is that your per hour views. For example, you put a video. मैंने एक वीडियो डाला था, मेरा per hour views is somewhere around. I just put the video 7 PM को और 9 बजे it was doing really well. It was doing some 5,000 views per hour. And 12 बजे रात को मैं देखता हूँ 5,000 से वो 350 पे है. My point is that's not even gradual. That's a slump. Yeah, that's like and वो मैं समझ ही नहीं पाया क्यों हुआ. There were no strikes on the video कि लोगों को पसंद नहीं आया, किसी ने ये strike किया, but I don't know, but yeah, it's very hard to understand. And Instagram is again very simple. It's easy. It's a low stake game. आप कैमरा चालू कर दो, आप रील डाल दो, एक नहीं चला दूसरा डाल दिया आपने. But again, shooting a YouTube video which a lot of people don't know is difficult because ये देख ले. Yeah, a lot of people tell us कि अरे YouTube का वीडियो क्यों नहीं डाला. मुश्किल है बस. प्रॉब्लम कैसा है हुसन, बिकॉज अपन 2017 बैच के अपना प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ कि आई थिंक यू विल रिलेट टू दिस कि 2 महीना कम से कम लगता है थॉट के साथ, अपने को लगता है ये थॉट तो अभी भी और कुछ हो सकता है. यू डू दैट जोक फॉर अ ईयर, देन यू फील अरे हाँ कम से कम. बट आई फील लाइक नाउ वो टाइम भी हमें शॉर्ट करना पड़ेगा. Yeah, we'll have to get acclimatized to that. Yeah, and I think we are in a good spot क्योंकि हमें अभी स्टेज टाइम एक तो सिटी में भी शोज में मिलता रहता है, एंड मोर देन दैट हम जब खुद के शोज भी डालते हैं तो अब लोग आ रहे हैं, तो we have that stage time as well, which we didn't have a few years ago. Yeah, because we're in a good spot like खुद के शो में with me it is the problem is I've still not figured out my R, so I'm not doing new material. But if someone has figured out their R, like the other day I spoke to. Yeah, but even if you're not figured out your R, why not try new material? Because I want to give them a tight show. So there are still loopholes in the R where they're not laughing. अच्छा. So मेरे को वो tight तो हाँ, so I got to fix that. Then I'm thinking that I'll introduce a section in the end because a lot of comedians do that कि end में वो लोग open mic का material कर देते हैं या starting में कर देते हैं, बीच में कर देते हैं. I need to figure that out. But I've only done. I do it at the end. Yeah, I do it at the end of the show before my closing bit. You tell that or what? Tell them कि अभी हो गया show. नहीं. You don't tell them. So a lot of comics what they do, I've heard that they tell कि ये show हो गया 15 मिनट में कुछ नया करना चाहता हूँ. So they know ये नया है. But I don't see the value in telling that to your audience. Audience को as an audience member मुझे तो बस हंसना है. ये जान के कोई फायदा या नुकसान नहीं होता. Exactly. Actually, I don't like. Yeah, everyone has their own thing. I don't like talking to the audience in a way we talk within ourselves. कि अगर audience warm है कि cold है कि ये ऐसा है कि वैसा है. ये audience को नहीं पता. Like a lot of comics will go up on stage and when they don't get a laugh, they'll be like आज तुम लोग बहुत tough हो. Audience doesn't know that. They don't know. Exactly, they don't know. उनको तो जब before you said that, the audience is like मुझे तो बहुत मजा आ रहा है. But and then suddenly they're like, oh, I'm doing something wrong. It's very personal. See, Hussain, it depends from room to room. Like I did 2 shows in Bangalore. The first show, वो लोग ताली वाली बजा रहा था. Enjoy कर रहा था. Second show में they were not applauding, but they were like they were enjoying, but they were not applauding. So
the whole ऐसा होगा कि उनका रूम का पूरा तरीका ही ऐसा है कि वो लोग अपलोड ना करें, अलग-अलग but they are तरीके के लोग enjoying होते it, हैं but ना, वो yeah. आपको you have to read the room. You have to read it. You have to understand that these people might not be making a lot of noise, but they are enjoying what it is, what is being said. Yeah, man. That understanding also is hard. Sometimes you can't tell, and it's difficult to say कि ये लोग हंस नहीं रहे, कि इनको funny नहीं लग रहा. And laughing is always the best policy. If you come to a stand-up comedy show, जोर-जोर से हंसो, आवाज करो, हमें अच्छा लगता है. ताली बजाओ, ताली बजाओ. ताली बजा दो बस. ऐसा कॉमेडियन ऐसा पॉज लेना, तो आपको पता होना चाहिए क्यों ना चाहिए कि आप ताली बजा दो, थोड़ा ताली बजा दो. हाँ. मैं एक पूछने का तेरे से कि बिकॉज यू लाइक आई हैव अ प्रॉपर कॉर्पोरेट जॉब, सो मेरे को कोई पूछेगा कि आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज वॉट एग्जैक्टली, is sales person Siddhartha Shetty or a stand-up comedian Siddhartha Shetty? It will always be a stand-up comedian Siddhartha Shetty. In your case, both these spectrums are very creative. You are a very good writer. You're a very stand-up comedian. तो उसमें तू क्या identify करता है अपने? Comedian, always. Comedian. That's my first thing. I think you become a comedian the day you start calling yourself a comedian. Because you like writing also. I love it, yeah. But why not writing, yaar? Writing has a lot of other things attached to it. It's very mythological, or it is. I mean, वो नहीं. The process of writing is great, but as a writer, जो भी काम बाहर आता है मेरा, वो सिर्फ मेरा नहीं है. उसमें director भी है, उसमें producer भी है, उसमें the guy who first had the idea and he gave me the idea to write it, the brand, whatever. There are other limitations कि हम इसको YouTube पे डाल रहे हैं, Netflix के लिए कर रहे हैं, Amazon के लिए कर रहे हैं, तो उसमें उसके limitations आते हैं कि भाषा ये नहीं बोल सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. So it is a challenging field and I love it, I enjoy it, but stand-up is pure. It is, मैं stand-up जब करता हूँ, मैं स्टेज पे जब जाता हूँ, तो मुझे जो करना मैं वही कर रहा हूँ. Exactly. ऐसा कोई आके मुझे नहीं बोल रहा ये मत कर, वो मत कर. I mean, we tell each other as advice, but nobody's going to tell me you can't do this or you can't do that. Like in my 1 hour show, there are parts in the show where I do bad jokes, but I like them. They're like kids only. हाँ. Like our parents don't like us, yeah. Yeah. तो उस तरीके के ये सब जोक्स होते हैं छोटे मोटे जो मोस्ट लोग को नहीं पसंद. हाँ, मेरे कुछ जोक्स है, मतलब they're how would I say, not in a very good taste. I talk about how friends used to come up to you in school and there's always this one friend है ना, वो गंदा रूमर बोलता था. तो पता है क्या, अमिताभ बच्चन ना, रेखा ना, एक ब्लैक मर्सिडीज में ना ओयो में जाते हैं, और मैं पूरा ऐसा स्टोरी बताता हूँ. एक हमेशा दोस्त रहता है जो मतलब फालतू रूमर देता है, और वो जोक मैं पूरा वो पिक्चराइज करता हूँ कि अमिताभ रेखा जा रहे हैं, और बट वो उसको इतना लाफ नहीं आता, बट जो समझ में आता है लोगों को, वो लोग बहुत जोर जोर से हंसते हैं, बिकॉज वो मेरे को करना पसंद है. if you have grown up in that environment, ये स्टोरी अगर तुमने सुनी है बचपन में, जो मैंने सुनी है, yeah, everyone has heard it. अमिताभ रेखा is a common knowledge, even Jan Bachchan knows it. Yeah. वो इसीलिए खड़ूस लगती है हमेशा. He's not खड़ूस, man, come on. Have you seen Silsila, bro? Have you seen Silsila? No, I haven't. You haven't seen Silsila? No. Silsila is a movie where Amitabh Bachchan cheats on his wife. And take a wild guess, wife को किससे play किया? रेखा? नहीं, जया बच्चन. Picturization देख, she's shown as someone who's very timid, एकदम quiet. और रेखा का रोल ऐसा बताया सल्ट्री सा, आंखों से प्यूबर्टी छीन लूंगी मैं. I'm like, you as a husband are there in the set, you know that she's going through trauma. वो होगी बेटर यार. रॉकी एंड रानी में क्या किया वो लोग ने? रॉकी एंड रानी में भी ऐसा रोल बताया. तुम बताओ किसी का रियल लाइफ इंसिडेंट पे किसी को टाइपकास्ट करते हैं क्या? भाई वो औरत होगी बेटर यार. She has been through so much. Yeah, actually. हाँ, ये एडिट करना पड़ेगा, बट ये इसमें क्या एडिट करना पड़ेगा? You're taking her side, right? I'm totally taking Jaya Bachchan's side, man. Yeah. I mean, of course, dude. The dude cheated on her. And he made a movie about it. and then he put her as the wife that he yeah, cheated and on. he is. That's mad. मुझे पता नहीं था, इस सिलसिला का केस नहीं पता. Yeah. इस सिलसिला का सिलसिला मुझे नहीं पता. Yeah. Okay, so I'll teach you about coffee. ठीक है? तुझे तो कॉफी के बारे में क्या पता है पहले ये बता. अभी तूने स्टार्टिंग में बोला ब्लू टोकाई. तो ब्लू टोकाई ऐसा हो गया था कि कुछ साल पहले ब्लू टोकाई पाली वाले पे, और पहले मैं हमेशा से वो कैफे कॉफी डे में जाने का, वो कैपेचिनो मोका 8 घंटा बैठने का वो, तो पहले कैफे कॉफी डे का एक ऑफर रहने का 250 रुपए में वो लोग छोटा कैपेचिनो देने का, और फिर वो फंगस वाला गार्लिक बेडशीट देने का वो लोग. हाँ, ठीक है. उसमें मस्त पे कि गर्लफ्रेंड के साथ बैठने का 8 घंटा, टिपिकल कॉलेज बिहेवियर.
तो my life was that like that only. मौका I have लाके one story about this. हाँ मैं कैफे कॉफी डे गया था एक बार हाँ और गर्मी के टाइम स्कूल टाइम हाँ हाँ तो वहाँ पे जाके बैठा आई सॉ मेन्यू लिटरली राइट साइड सबसे सस्ता क्या है समोसा था 46 रुपीज हाँ आई बॉट समोसा हाँ हाँ एंड आई सैट फॉर एन आवर हाँ एंड देन हम 1 घंटा बैठे हैं मैं और मेरा एक दोस्त और फिर ये बंदा आता है वेटर आता है सर एनीथिंग एल्स आई वाज लाइक हाँ एक और समोसा अरे Then ब्रो हाँ हाँ he didn't bring the samosa. but He they're looked very at me and he said, "Sir, eating है actually." और फिर मेरे दोस्त को थोड़ा शाया हो गया तो वो बोला ठीक है बिल को हाँ but I've seen one thing कैफे कॉफी डे का बहुत तेज सा बना होगा बट दे आर वेरी स्वीट मैं मेरे को याद है मैं कॉलेज नहीं में तब मतलब बाहर ऐसे 8 लोग खड़े थे हाँ फिर मैं तो कॉलेज Made sense. ठाकुर विलेज में जो खुला था कैफे कॉफी डे और तभी के लिए मेरे लिए हम लोग के लिए बहुत जो मेरा तो 30+ वाला मिलेनियल व्हाटएवर बुड्ढा बुला दे तुम लोग हम लोग को व्हाटएवर इट इज कॉल्ड हम लोग के लिए बहुत बड़ा चीज था बहुत बड़ा चीज था ब्रो कैफे मतलब एसी है कैफे है गाना बज रहा है सिसडी वरुण ठाकुर का वो बेटा ना सिसडी तो फिर वो मेरा वही था वही चल रहा था मुझे पता नहीं था कैफेस के बारे में तो फिर एक बार क्या हुआ कि टिंडर वाला जनरेशन टिंडर वाला दौर आया तो मेरा एक टिंडर डेट में था तो किसने बोला कि दिस वन क्वाइंट कैफे क्विंट बोल दिया क्विंट ये बैंड्रा वाले क्विंट खत्म हो गया तो फिर पहली बार में वो गया वो पाली हिल वाले कैफे में हाँ तो भाई ब्लू टोकाई का जो कॉफी वो पहली बार पिया ना वो पहला कॉफी मेरे को लगा तो टक करके लगा रे ऐसा लगा अरे ये ठीक लगता ना ये है तो मैं तब से ब्लू टोकाई का फैन हूँ वेरी मच ब्लू टोकाई फैन व्हाट इज योर ऑर्डर कुछ ब्रांड डील वगैरह रहेगा तो प्लीज मैंने जितना ब्लू टोकाई को प्रमोट किया अपने रील्स में मैं कसम से बता रहा हूँ आई शुड बी देयर फेस सच्ची बता रहा हूँ वो लोग मेरे को रोज एक कॉफी भेजना चाहिए मैं इतना प्रमोट किया ब्लू टोकाई को बट व्हाट्स योर ड्रिंक एट ब्लू टोकाई वियतनामीज वाला जो कंडेंस मिल्क डाल के देता है ना लोग ओ राइट वेरी नाइस तू बूजी गया है क्या बूजी बैंड्रा में मैं उसमें देखता हूँ वो जो रील्स आता है ना हे गाइस देयर इज न्यू कैफे इन बैंड्रा बूजी कैफे बूजी बहुत अच्छी बूजी में क्या है सो मैं भी जब पहली बार गया था ना मुझे भी ऐसा लगा था कि वन ऑफ दोस यू नो लाइक अमीर लोग जाते हैं 800 रुपए की कॉफी होगी है ना ऐसा नहीं है हाँ ऐसा नहीं है कॉफी इज रियली गुड उसमें एक ऑरेंज फ्लेवर्ड कुछ तो नाम था उसका व्हिच इज लाइक some orange juice or orange something is there in that coffee. It was like I've never had something like this before. What is it? It's a milk base or no milk. Some orange flavor is there inside. I don't know if they put flavor, if they put juice, I don't know what they do. But orange related कुछ तो नाम है उसका मैं भूल गया. I'll tell you why coffee and orange. I'll tell you about this. Why coffee and orange really go well. There's a brew that मैंने ये cult form किया मैंने बहुत लोगों को एक cult में include करा. It's called the coffee orange. ब्रू है दुलाली का ब्रो तो पहली बार मैं दुलाली नहीं कॉफी और बियर दिस इज बियर बट इट्स कॉल्ड कॉफी ऑरेंज बियर आई कांट एंड इट्स तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि इसलिए मैं तो समझा रहा हूँ मैं संक्षेप में इसलिए तो मैं आया इधर तो इतना बढ़िया है ना हुसैन कि तेरे को पता काला खट्टा पीते थे अपन बचपन में आई डोंट नो अभी भी बचपन की काला खट्टा पीते थे वो गोला इमेजिन दैट इन बियर लाइक प्रॉपर ऐसे प्रॉपर खट्टा है प्रॉपर मीठा है और वो कॉफी में मैं पहली बार गया ना मेरे को उसने बोला कि कॉफी ऑरेंज है मैंने कॉफी ऑरेंज बियर बहुत जबरदस्त चीज है मतलब कोई अगर जा रहा है दुलाली में कॉफी ऑरेंज ट्राई करो इट्स अमेजिंग आई मीन एज अ पर्सन आई कैन नॉट कंडोन दिस बिहेवियर अस्तगफुरुल्लाह बट मस्त चीज है यार राइट सो बूजी इज अ गुड प्लेस यू शुड ट्राई इट इफ यू हैवंट सो नाउ आई विल टेल यू द 3 or 4 टाइप्स ऑफ कॉफी ब्रूइंग मेथड्स हां जो तूने देखे होंगे and then the 3-4 different types of coffee. Okay, so you have an understanding of what is what. So the different types of brewing methods. First one is the French press. French press is like the most basic one. उसमें कॉफी का जो बीन होता है ना जो उसको ग्राइंड करते हैं in French press is very forgiving. तुम कैसा भी ग्राइंड कर दो चलेगा. Because in like the other method of making coffee is like called an espresso. In that you need very fine grind of coffee. It's very specific. तो जो तू अमेरिकानो पीता है या कैपेचिनो पीता है मोस्ट ड्रिंक्स हैव एन एस्प्रेसो इन देम वो कौन सा रहता है मैं एक बार रोहित शर्मा के रील में देखा था क्योंकि मशीन रहता है उसमें वो कुछ जैसे ई पुट्स ऐसे छोटा सा कुछ डालता है वो सो दैट्स एन एस्प्रेसो ओनली बट एक कंपनी है नेस्प्रेसो करके व्हाट दे डू इज दे हैव अ मशीन दैट मेक्स एस्प्रेसो बट इंस्टेड ऑफ लाइक तू ब्लू टोकाई में वगैरह देखा होगा एक कॉफी पाउडर एक हैंडल में जैसी चीज में डालते हैं हां देन यानी उसको टैम्प करते हैं या तो फिर उसको ऐसे करके फिट करते हैं फिर डाल करते हैं और सो दैट्स अ रेगुलर मशीन द नेस्प्रेसो इज द होम मशीन
जिसमें वो जो कॉफी उसमें डाल रहे हैं ना, जो हैंडल में डाल रहे हैं, it is called a percolator. I don't know, I've forgotten what that thing is called. ओहो too much It's I can't remember the name right now, but उसके अंदर कॉफी डालते हैं और फिर टैम्प करते हैं, तो the Nespresso pod comes pre हाँ fit पॉड किया हुआ। पॉड उसको पॉड pod बहुत बोलते मस्त चीज लगा मेरे को। हाँ, तो फिर उसको अंदर मैंने डालते हैं, उसको बंद फिर करते मैंने हैं, अमेजोन में espresso जाके done. प्राइस देखा उसका, मैं नेस्के Don't buy. मैंने पानी उबाला नेस्कैफे डाल के। Exactly. If you want a machine like that, second hand मिल जाता है, ये espresso machines मिल जाते हैं जो 8-10-12 हजार के नए आते हैं। You have one like that I at your have- place? I have one. मैंने भी second hand ही खरीदा, OLX. Invite यार, what is this? Please come. Please come. मैं तेरे को अलग-अलग टाइप का कॉफी बना के पिलाऊंगा. So I have a French press machine also, and I have an espresso machine also. So French press is the easiest way to make coffee, and it's like a very forgiving way of making coffee. तो थोड़ा पानी ऊपर नीचे टेम्परेचर ऊपर नीचे कर दिया तो कॉफी 19-20 का अच्छा ही बनता है. So French press is like a basic way of making it. It's very easy और आता भी सस्ता है. French press का मशीन आएगा 1000-1500-2000 रुपए का, एंड कॉफी बीन्स ब्लू टोका तो खरीद सकता है. गर्म पानी डालो, कॉफी बीन डालो, 4 मिनट रुको, बन गया कॉफी. So French press is the easiest. Then there is a pour over, which is like the fancy one. हाँ pour over I'll tell you, वो पता है, वो एक उसमें पेपर वाला हैंडल होता है. Then There there's are two coffee. types of pour over also. This is the Chemex you're talking about. Chemex. Filter paper होता है, Yeah. और फिर उसके अंदर ब्लू टोका से लिया, खरीदा था मैंने. पाउडर डालते हैं, फिर हाँ. ऊपर से ऐसे पानी ऐसे राउंड हाँ. पानी करते हैं, तो फिर वो ऐसे होके नीचे डिस्टिल होता है. हाँ. There's another V60, which is a version of V60, what is this engine or what? Coffee, what is V60? sounds like that, Yeah. but it's supposed to be more concentrated, I think. I don't know the exact differences, but there are two types of pour overs. French press pour over, espresso I already explained. Espresso में the coffee is the preparation of coffee is done from like जो गर्म पानी होता है ना, और जो espresso का कॉफी का पाउडर होता है, it's a very concentrated espresso जो होता है, it's a very concentrated version of the coffee. French press वगैरह में तो पानी ज़्यादा डालेगा तो the coffee beans will like spread across. I'm giving a very crude example, explanation, but that's what it is. Espresso में it's a very concentrated shot of coffee. That's why people like, gym wale, I take 2 espresso shots before I go to the gym because it's like instant. Like in Italy and all, where espresso was first. हाँ मेरे को but in general black coffee रहता है. हाँ, black coffee. वो मतलब even before going on stage मैं थोड़ा I'm not a connoisseur or something, but so black coffee also, like if it's just espresso, then it's like the purest, the most concentrated form. Most people, myself included, मैं उसमें फिर गर्म पानी और डालता हूँ. That becomes an Americano. हाँ. And if you put espresso on hot water, it becomes long black. Long espresso on. So espresso is the main thing. हाँ. Cappuccino, latte, Americano, long black, macchiato, ये वो सब में espresso ही डलता है, ठीक है? So if you put espresso and you put hot water on that, that's called an Americano. If you put hot water first and then put espresso on that, then it's a long black. अच्छा. Right? Cappuccino is you espresso and then put milk on it. Latte, espresso, lot of milk on it. That's हाँ लाटे तो हाँ ज़्यादा दूध डालते हैं उसमें. हाँ ज़्यादा दूध आता है basically. और फिर वो जो दूध का जो foam होता है, that they used to make the latte art. भाई ये जो बरिस्ता लोग क्या मेहनत करते रहेंगे यार, आप देखो लगता है इजीली. नहीं, बहुत टफ है यार, इट्स टफ फॉर मुश्किल. मैं ट्राई किया हूँ, इट्स वेरी हार्ड और बहुत दूध वेस्ट. मेरे को तो भारी लगता है मैकडॉनल्ड्स में. नहीं क्या, आई नो बहुत लोग बोलते हैं कि मैकडॉनल्ड्स का कॉफी नहीं. मुझे तो पसंद है. एक्चुअली मुझे भी पसंद था एक टाइम मैं कैफे, बट मुझे मस्त लगता है वैसे एमएम के शेप बना देते हैं. बट वो लाटे आर्ट नहीं करता ना, वो तो पाउडर तो लाटे आर्ट तो अपना सीसीडी वाला भी करके देता था. सीसीडी, ब्लू टोका एंड ऑल दीस गाइस विल डू इट एंड दे डू इट अमेजिंगली. आई हैव ट्राइड, इट्स वेरी हार्ड टू डू और बहुत दूध वेस्ट होता है, तो मैं नहीं करता. Like there are other ways to do it and all. Soap bubble से भी लोग सीखते हैं, बड़ा like इतना मेहनत नहीं करने का. I mean, maybe if this podcast gets to a point where I've started doing things, then maybe one of these places here will make coffee like that. So, pour over, French press. Pour over, French press, long black. नहीं. Pour over. There are these. Those are the types of coffee. This is the type of making coffee. Making coffee में pour over, French press, espresso और फिर एक नया चीज आया AeroPress. हाँ ये बताना एरोप्रेस. एरोप्रेस है ना, एक बंदा है, उसका नाम मैं भूल गया. वो 2006-07 में खुद से एक नया बना है. Like it's the most recent new coffee invention. It's a machine to make coffee. It makes coffee almost as concentrated and as good as an espresso machine, but without like the machine and the tam jam and all that. अच्छा. And it's a small like plastic thing that you can carry everywhere.
ओ सस्ता है क्या? सस्ता मतलब 2-2,500 में मिलता अरे है जो इंडिया का कॉपी है, और जो एक्चुअली एरोप्रेस द एक्चुअल एरोप्रेस वो 4,000 4,500 but that's reasonable. हाँ। Much cheaper than the machine. या ऑब्वियसली क्योंकि उसमें है भी कुछ नहीं ना, एक दो प्लास्टिक ट्यूब होते हैं, हाँ। एक में थोड़ा कॉफी डालने का, फिर दूसरा पानी डालने का, और प्लंजर होता है, फिर ऐसे जोर से दबाने का. सो एस्प्रेसो रिक्वायर्स प्रेशर. तो अगर एस्प्रेसो मशीन खरीदने जाएगा तो उसमें लिखा होगा 9 बार 15 बार ऐसा. द प्रेशर इज द हायर द प्रेशर द बेटर द कॉफी. That is a compressor in it, छोटा वाला. आई मीन वो अंदर क्या है पता नहीं, बट जिस प्रेशर से वो पानी कॉफी को दबाता है वो प्रेशर के हिसाब से कॉफी अच्छा बनता है. So the AeroPress, you are the one providing the pressure. So if you give it a nice uniform pressure, nice coffee will come out of it. In the AeroPress there are two ways, like थोड़ा उल्टा करके भी कॉफी बनाते हैं, सीधा भी कॉफी बनाते हैं, and there's like a lot of interesting things you can do with it. There's a competition also. अरे Of इंडिया में नेशनल लेवल AeroPress competition होता है, फिर इंटरनेशनल लेवल पे competition होता है AeroPress में कॉफी बनाने का. Because it's one of those things, dude. Like it's a very simple machine to use. But if you use it well, there are many different ways of coffee you can make with it. So these are the 4 ways. Or espresso and AeroPress say you can make different kinds of coffee. Now coming to the brew types. There are 2 types of brew. The hot brew, which is the regular coffee, and then there's the cold brew. Iced coffee and cold brew are 2 different things. मुझको एक ही लगता था. अलग है. Mind blown. Get ready for your mind blown. Okay. Iced coffee is coffee में तो ice डाला. Iced coffee. Simple. Cold brew is, so how coffee becomes coffee is, coffee का पाउडर जब गर्म पानी के साथ मिलता है ना, तो उसका कॉफी जो प्रॉपर्टीज होती हैं अंदर बीन्स की, वो पानी में मिक्स हो जाती हैं बेसिकली. हाँ. राइट. तो जब पानी गर्म होता है, तो जब गर्म पानी जब when it kisses the coffee grinds, the babies happen. Okay. But when cold water touches the coffee beans, they don't kiss and all. They're not hot, so nobody likes it. So it doesn't happen. Basically, it takes a lot longer. So cold brew coffee takes like 24 hours to make. Hot brew तो मतलब से एस्प्रेसो को बटन दबाया चालू बन गया. French press भी 3-4 मिनट में बन जाता है. AeroPress भी like in a couple of minutes you can make. Cold brew takes like 24 hours to make. मतलब पानी और कॉफी को ऐसे 24 घंटे के लिए रखना पड़ेगा तो वो बन. अरे आपने ये अच्छा है यार. गर्म पानी में ऐसे ठंडा कर देने का अपने को. वियतनामीज आइस कॉफी. अरे कंडेंस मिल्क मैं देखा ना बीच में कहीं देखा था कि साउथ ईस्ट एशिया में बहुत जगह पे ये मलेशिया सब में दे पुट अ लॉट ऑफ कंडेंस्ड मिल्क इन द कॉफी. इट टेस्ट्स बेटर. राइट. इज इट? आई डोंट नो. मैं लॉन्ग टाइम अगो आई स्टॉप्ड हैविंग मिल्क इन माय कॉफी. मैं जब से वो सुना वो सिवेट वाला कॉफी लुपी क्वाक मैं वाला कि संपला विषय चा पिणार आपी चा पिणे कॉफी लुआक. It's actually not that great. It's like a good marketing thing. It is not it is like someone you had to hate humans in general so badly कि जिसने भी इन्वेंट किया ना, just wanted to. नहीं जो कॉफी उसमें जो निकलती है वो साफ ही होती है. ऐसा नहीं है कि टट्टी वाली होती है. अरे यार साफ करते हैं वो. हुसैन क्या यार रहने देते हैं ना यार. क्या मेरे घर पे थोड़ी पड़ी हुई है कॉफी लुआक. हाँ तू पी भाई. मेरे को मैं पिया नहीं हूँ. मैं चाय पत्ती के चाय बहुत महंगी आती है. मैं 50 ग्राम लेके रखा हूँ. बट हुसैन क्या है यार, मतलब उसके अंदर क्या फिल्टर है यार. वो क्या पता, चखेंगे ना भाई. लाइफ में सब कुछ एक बार ट्राई करना. उसमें मालूम है तेरे को ये होता है क्या बोलते हैं उसको, एनिमल वायलेंस है उसमें. यस एनिमल वायलेंस है. वो नहीं खरीदना चाहिए. मेरे पास 50 ग्राम ही है. लेकिन क्या हुसैन क्या बोलेगा. अब से नहीं खरीदूंगा मम्मी प्रॉमिस. क्योंकि वो महंगा भी बहुत है भाई. I don't think no matter how good that coffee is, I don't think it's going to be something earth shattering that requires like 500 रुपए for 50 ग्राम. उसमें भी ऐसा रहता है कि मैं सुना कि सिवेट रहता है ना, उसका मूड वगैरह अच्छा होना चाहिए. अभी सिवेट लूज मोशन वगैरह रहेगा तो वैसा नहीं. Exactly. It's very difficult process. Anyway, so that's all the coffee thing I have to tell you. There's more I can talk about, but I think that's plenty. Yeah. अब तू sales सीखा. Sales basically, I'll tell you how it started for me. Sales is something that I've always been doing since college. कि मैं कॉलेज में भी फेस्ट वेस्ट के सेल्स टीम में था, मार्केटिंग टीम में. तो बेचना बचपन से पसंद है. देन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर. थोड़ा ग्रीव्स बहुत सारा इंग्लिश एक साथ बोल दिया. Started working for a construction equipment manufacturer. And it was basically technical sales. So for me, technical sales मतलब you need to know about, for example, you're selling a concrete batching plant. So the word itself is very technical. You need वो जो round होता है वो. No, that's a transit mixer. I'll tell you what I'll explain you everything.
Concrete batching plant is basically which combines, it's amalgamation, it's a plant where उसमें mixer होता है और एक batcher होता है. सीमेंट को वे किया बैचर में, फ्लाई ऐश को वे किया, गिट्टी को वे किया, पत्थर को वे किया, सैंड को वे किया. इसको एक मिक्सर होता है, मिक्सर में लेके जाते हैं, उधर मिक्स होता है. मिक्स ऑफ दिस इज कॉन्क्रीट. ऑलराइट, दिस इज दैट मशीन. हाँ तो ये तो ये प्लांट किधर है? कांदिवली में, बराबर. एग्जांपल, कांदिवली पॉइंट ए. तेरे को बनाने का है, काम किधर चल रहा है? मेट्रो का जोगेश्वरी में. कांदिवली से जोगेश्वरी कैसे जाएगा? कंक्रीट तो बन गया प्लांट में, तो ट्रांजिट मिक्सर आता है. कंक्रीट कैन नॉट सेट, राइट? So what transit mixer essentially has, it has a drum and it has spirals inside. So it keeps on agitating it. So concrete doesn't set. Right. Then and this is important because कांदिवली से जोगेश्वरी आने में इतने सारे पॉट होल हैं, टाइम लगेगा, बहुत सारा टाइम लगेगा. तो it comes to this site. Then there concrete is placed. So there are different ways in which you can place concrete. There's a pump. Then there is a manual way. So different ways. That's all. So and that's the machine that you sell. Yes. So I मतलब तेरा टेक्निकल सेंस है, तो तेरे को ये सब करना नहीं मिलता होगा ना? सर आप सर बहुत अच्छे हो सर, ले लो मेरा मशीन. लेकिन नहीं वैसा नहीं होता. It see, I feel it's both. Interpersonal. India is basically a lot of relationship selling happens. I've been in the industry for 12 years now. I've known people for so many years. So there's a level of trust that if I buy, after a point of time, in sales, it is not the company that you work for, it is your own brand. Like people are not buying because your product is good. People are buying because Hussain is selling it to me. And if I buy, मैं हुसैन को जानता हूँ. मेरा अगर साइट पे 2 बजे भी कुछ इशू हो, मैंने हुसैन को 2 बजे भी कॉल किया, हुसैन सर्विस वाले को भेज देगा वहाँ पर. इट्स अ हाई स्टेक गेम. सो यू नीड टू नो तुम किस पे पैसा डाल रहे हो. वो आदमी पे पैसा. एक मशीन कितने की आती है? इससे 4-5 लाख, 10-20 लाख? No. On an average, it ranges from 30 lakhs to 1.5-2 crores. एक मशीन? Yeah. And जो ट्रांजिट मिक्सर बोल रहा है, हंडी, उसको हंडी बोलते हैं हम लोग. It's like a हंडी. So that is somewhere between 7.5 to 8 lakh rupees. Bota boti. But the plant is expensive. Well, it has a lot of things, right? It has a batcher, it has a mixer. So a lot of these plants have. ये कांदिवली में है ऐसा plant? There are a lot of places. Kandivali feels like it's like inside the city, no? Kandivali, I just gave you an example. Acha. See, so there are two ways. There are a lot of RMC companies like this, Ultratech, the JSW. For you're a builder. मैं builder. ठीक है. मेरे को there are two ways in which you can operate. You can have two ways I can make money. Do a good job and steal. Steal, yeah. तो अरे builder थोड़ी, हाँ ये बाकी लोग करते हैं. Builder can't steal, na. Essentially, he has to give you a good product. Yeah. That is how, like for example, लोग क्यों बोलते हैं कि ओबरॉय, अरे मैंने ओबरॉय का घर खरीदा. You see हीरानंदानी का फिनिश अभी भी पवई वाला. इतना साल बैंग ऑन है. ओबरॉय का प्रोजेक्ट अच्छा है, रईजा का प्रोजेक्ट अच्छा है. So that your finish matters. So thing is that, for example, तू builder है. देखो बिल्डिंग बननी है, ठीक है, तो कंक्रीट लगेगा. There are two ways in which you can source concrete. You can have a plant of your own inside where you're making the building. Yeah, nearby, or else you can outsource it, or else there's a contractor who buys the plant for you, or else you can outsource. अभी तू sales जब करता है, तो what like tips and tricks are you using to make sure you convert sales? क्या किसी को थोड़ा एक bribe दिया, कुछ 200 रुपए का पानी बोल दिया? नहीं वैसे नहीं होता है. That's very one off. But a lot of people think sales is like talking a lot कि आप कस्टमर के सामने बात करो, you be very मैं बीच में I've attended those sales training where they're like, talk to customer like this, like, you know, when customer asks you how was your day, how are you, tell them I'm on top of the world. मैंने बोला, you can't talk like that to people. That is not what people talk. That's very weird, right? Exactly like how stand-up is. You have to read the room. You have to understand whom you're interacting with. For example, I'm interacting with someone who's of my age. I can be a little casual. I can talk, अरे सर क्या चल रहा है और बाकी. When I'm interacting with someone who's of my dad's age, I need to be on point. I need to respect the authority, and because for him I'm a kid. So I have to tell him, अरे सर हम तो आपसे सीख रहे हैं, आप बताओ. And my selling but is... that game happens, right? Like अगर तू किसी बूढ़े के आदमी के साथ बैठा है तो सर आप सर.
for example, a 20-year-old comes to you. You're 52, right? Yeah, you're 52. For example, a 20-year-old comes to you, Hussein. मेरे कमर में दर्द हो रहा है. तेरे पास कोई 20 साल का लड़का आके तेरे को बोलता है, अरे तेरे को मालूम है बिजनेस ऐसा होता है, तू यार तेरे सबकॉन्शियस तू बोले ना ये क्या कल का लड़का को सिखाएगा. इट इज द सेम. यू हैव टू रीड द रूम. वो तो है. तो यू हैव टू थोड़ा थोड़ा आपको सब में से बनना पड़ता है. हाँ सर आप बताइए, सर ऐसा नहीं है सर, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये होगा तो बेटर हो सकता है. बट दैट विद समवन ऑफ योर एज को बोल देता है यार ये ले ले, ये अच्छा है तेरे को. But with someone you can just there's someone there's thin line between telling and suggesting कि अब suggest करो करे ये है. अब So ये लेकर के you're not someone who's going to be like hard selling. भाई ये बहुत है ले बहुत मस्त है. Not like that. You can hard sell to people you've known, but you can't hard sell to people you're just meeting them for the first time. And sales is also a lot about listening to what they're trying to tell you. Lot of people don't do that. They don't listen. सामने वाला क्या बोल रहा है, उसको चाहिए क्या? हाँ उसको क्या चाहिए. Because my selling is very application based. Every requirement is different. Every customer is different. For example, तो एक ही मशीन बेचता है ना, क्या रहेगा उसका एप्लीकेशन तो एक ही होता है. no, the capacity varies. Na, for example, I'm selling it to a contractor who's building a bridge. The concrete requirements are different. I'm selling it to a contractor who's doing something else. The concrete requirements are different. So it is very technical. Give me like a 3-point explanation of how to be good at sales. You should plan your approach really well. Basically, this is very basic. That instead of doing 7 to 8 meetings a day, you should do meetings that matter. You should know you should know your product. You should know your product really well. एक तो है कि plan your customers really well. किसको मिलना है, कौन मेरा customer base है, कौन मेरे को खरीदेगा. That comes. And second is that you should know your product really well, in and out. Basic पता होना चाहिए आपको कि more than कुछ सवाल करो तो. हाँ, फॉर एग्जाम्पल सवाल के बहुत लोग क्या करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जाएंगे कस्टमर के पास, सामने वाले का बुराई करेंगे. अरे सर उसका ऐसा है. डोंट डू दैट. नेगेटिविटी नेवर सेल्स. यू हैव टू टेल देम कि अरे मेरा ये है सर, मेरा ये एडवांटेज है. यू हैव टू बेसिकली टेल देम अ स्टोरी. स्टोरी ऑलवेज At the end of the day, you're a storyteller. No? Does that help as a comic? That it helps as a comic, and also because when you tell them कि सर मैंने इसको बेचा, वहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम हुआ, फिर मेरा मशीन गया, फिर मेरे मशीन ने ऐसा किया, फिर वो लोग खुश हुए, फिर ये इशू था उसके साइड पे, मेरे मशीन ही वाज यूजिंग दिस मशीन फॉर अ व्हाइल. यू डोंट नेम द कंपनी, सो ही हैज अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू दैट यू नो कि ये अपने प्रोडक्ट के बारे में भी जानता है. being funny helps. नॉट एवरीवेयर, बिकॉज सब लोग नहीं, बूढ़े लोग नहीं यार, बहुत लोग अप्रिशिएट नहीं करते अपने आप पे. बहुत वियर्ड ह्यूमर क्वेश्चन है लोगों का दैट हर जगह पे. बिकॉज basically the people that I deal with, they're all HNIs. So I deal with infra companies. So हाँ, तो मेरा मतलब वही होता है कि VP को मिल लिया, प्रेसिडेंट को मिल लिया, तो मैं उनके सामने तो मजाकिया नहीं हो सकता unless or until he is somewhere seen me, और किसने बोला कि अरे तो मतलब कि थोड़ा बहुत. But you can do a lot of small talk. You essentially don't need to be funny, but a lot of small talk. Yeah, but like, so for example, if you listen to this podcast, and you learn small things about a lot of different things, and if you meet someone with an HNI and maybe he's a coffee corner fool, so you can say a couple of things. So now I'm going to ask you a couple of questions about coffee and see how much you learned, how much you absorbed. Okay? Nothing I know. Filter coffee. Tell me a difference between long black and Americano. Long black and Americano. Long okay, wait. Hey, wait यार, I know this. Yes, come on. दोनों में Americano, see long black is गरम पानी में espresso डाला. Americano में क्या espresso के ऊपर गरम पानी डाला. Come on. Mohammed Hussain, best teacher award goes to. Okay, that's one mark for you. अभी तू मुझे सवाल पूछ about sales. From what you just told me. What is a batching plant? Shit. Batching plant. What is a batching? What is the difference between a batching plant and that गोल? Batching plant में सब वे होता है और गोल में मिक्स होता है सब कुछ. गोल में ट्रांसपोर्ट होता है. That's why it's called a transit mixer. Transit mix. हाँ, but ठीक है, but 1 mark. I'm a good teacher. I'm like अरे nice handwriting, nice you put column भी बनाया तो मैं दे देगा marks. I'm a good teacher. I'll ask you one more question. Tell me the 2 types of pour overs. I don't know. Wait. V360. V60.
V60. And Then दूसरा बहुत then other one some V7 engine, Royal Enfield. V60 is correct, and the other one is like a very chemistry name. There's a hint in what I just said. latency, latent. जो मैंने sentence बोला ना उसमें hint है. Carbohydrate. जो मैंने sentence बोला उसमें hint है. Chemistry name. Very chemistry name. Chemtrol. Chemex, yeah. Chemex. That sounds like a company's name. I don't know. I mean, might be some company name also. Yeah. I'll give you half mark. V60 तो नहीं किया. चल last question. Last question क्या मैं I spoke everything in general. I can't ask you questions in that. Yeah, fair. And plus I'm MBA student. I'm good at sales anyway. हाँ मैं देखा है बहुत MBA स्टूडेंट्स को सेल्स करते हुए. हाँ बट मुझे एक चीज बताना है सेल्स के बारे में कि लोग if anyone wants to get into sales, मेरे को अभी now that I've been doing it for years altogether, I know it's easy but बहुत ज़्यादा tough है to begin with. Is it? It's very tough. But commissions and all? Or do you get commissions? Yeah, that's why it's one of the incentives. It's a lucrative But field. apart from commissions, is that you need to sales ऐसा प्रोफाइल है कि एक है कि अगर आप सेल्स कर रहे हो फॉर इयर्स टुगेदर आप डेस्क जॉब नहीं कर सकते. यू कैन नेवर डू अ डेस्क जॉब. आप बैठ ही नहीं सकते. Tired, yeah. I mean, बोर हो जाएगा तू. So sales versus marketing is always a competition. नहीं कैसा कंपटीशन है ही नहीं. सेल्स इज द ओनली प्रोफेशन दैट इज क्वांटिफाइबल. योर वर्क इज क्वांटिफाइबल. कौन सा जॉब क्वांटिफाइबल है? देख जितना तू पर्सनली इतना गुस्से में जो आवाज निकाला है ना तेरा अभी जितना जल्दी तूने जवाब दिया ना उससे मेरे को पता चलता है कि दिस इज ट्रू. सेल्स पीपल हेट मार्केटिंग पीपल. दैट्स ट्रू, राइट? नहीं आई डोंट हेट मार्केटिंग पीपल. सी मैं यू आर जस्ट बेटर देन देम. दैट्स व्हाट यू से. मैं ऐसा नहीं है. देख तो जानबूझ के एकदम एजी करने की कोशिश कर रहा है. ऐसा तो चाहता है लोग ऐसे देख के मैं इसको रील काट के डालूंगा ना. सिद्धार्थ शेट्टी कहता है अभी सेल्स फॉर एग्जांपल तेरे को तेरा केआरए दे रहा है बॉस. तेरे को क्या बोल रहा है हुसैन तेरा ये है कि देखो 25 यूनिट बेचना है ये क्वार्टर में. ये कस्टमर को बेचना है. एक कस्टमर को बेचना है 25 में से 5 इसको बेचना है. क्वांटिफाइबल है भाई. मार्केटिंग वाले का क्या क्वांटिफाइबल है? वाइब्स. हम लोग का रीच वाइब्स. अभी फॉर एग्जांपल आईटी वाले का भी क्या क्वांटिफाइबल है? कितना टिकट्स किया. सेल्स इज जस्ट इट्स राइट देयर. तो फ्रंट एंड में कितना पैसा लाया है तो. या दैट्स व्हाई इट्स बेटर नहीं है बट ठीक है क्वांटिफाइबल जॉब. तू अभी पोलाइट बनने की कोशिश कर रहा है. तेरे हाव भाव में मुझे दिख रहा है कि तू मार्केटिंग वालों को के ऊपर थूकता है. दैट्स मैं नहीं थूकता भाई. मुझे पसंद है मार्केटिंग वाले यार. कि अगर कोई मार्केटिंग वाला ऑफिस में बोला ना मेरे लिए कॉफी लेकर तो उसमें एक दो थूक करके देगा. ऐसा मुझे लगता है. ऐसा वाइब आ रहा है यार. नहीं यार स्वीट लाइक दैट. Cool. Rate me on a scale of 1 to 3 as a teacher. Good 3 यार. Good only. You also 3 man. You're also cute. Give me some love. That's it. All right. On that note, thank you so much for watching. Like, share, subscribe. Tell your mom you love her. And tickets to Shetty's shows and my shows are in the somewhere here or in the description. Come for the shows. The stand-up shows are very fun. Yeah. Right? I've seen Shetty's show. It's amazing. I've seen his shows. Amazing. So yeah. We both lied. Let's go. Thank you. Goodbye. Thank you so much. Bye.
स्कूल. ये मजा आया रे, मजा है ना. मस्त, फुल एंजॉय था. हाँ तो यही है. द फर्स्ट पार्ट इज बकचोदी.